Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Students, this is our lecture number 22. In our today lecture we will continue tenses. इससे पहले जो lecture थे, in those lecture we covered those passages which are included in your syllabus for this month. आज के लेक्चर में हम टेंसेस कंटिन्यू करेंगे, बट इससे पहले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने दो टेंसेस पढ़े थे, एक प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, द सेकंड वन दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, बोथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. In our today's lecture we will study present perfect tense, the third one. Today our topic is that is present perfect tense. So present perfect tense, this is on page number 80, 81, 82 and 83, from 80 to 83. So in our today lecture we will study about present perfect tense, what is the sentence structure of present perfect tense, what are the uses, and what are the Urdu identifications, Urdu identification of present perfect tense. So you are requested to you are requested to listen my lecture carefully. Okay, so we should start our lecture. Okay, so present perfect tense. But in this today lecture we will study only the active structure, the active voice of present perfect tense. In our next lecture we will study the passive voice of this present perfect tense. Okay, so first of all, what is the Urdu identification of present perfect tense? उर्दू जुमलों की जो पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, उसके लास्ट में हमारे पास उर्दू सेंटेंस की लास्ट में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह के अल्फाज आते हैं. जब आप लोगों की पेपर में जो सेंटेंसेस आती है उर्दू के, तो उसमें सबसे फर्स्ट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस. आप लोगों को मुख्तलिफ सेंटेंसेस देते हैं, तो आप लोगों ने फर्स्ट आपको उर्दू आइडेंटिफिकेशन आपको आनी चाहिए कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है. सो उर्दू आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस. The second one, that is uses. So we use is present perfect tense for those activities, for those action which are taken placed in past but in recently past. Okay, बाकी जो present perfect और past perfect tense. So one thing more, the difference between present perfect tense and past simple tense, इसमें मैं थोड़ा difference आप लोगों को बताऊंगा. Some because I have observed many people when they are using these two tenses they are using incorrect. Okay, so I will tell you what is the difference between present perfect tense and past simple tense, when you have to use present perfect tense and when you have to use past simple tense. So and now the next one, that is sentence structure of present perfect tense. So मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब भी वेदर इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंसेज में हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. यू हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, सो इस टेंस में भी हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ करनी है. इसके अलावा थर्ड फॉर्म के साथ जो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होती है, दैट इज़ हैज़ एंड have, but according to the subject. If the subject is I, we, you, they are plural subject, then you have to use have. But if the subject is singular third person pronoun or singular subject, then you have to use has. Okay, so these are two helping verbs, has and have. Verb की third form and has and have are the helping verb. Now the difference between present perfect tense and past simple tense. स्टूडेंट्स, जब आप लोग पास्ट टाइम की, पास्ट एक्शन की बात करते हो, उसमें आप डेट मेंशन करते, टाइम मेंशन करते, देन यू हैव टू यूज़ पास्ट सिंपल टेंस. बट अगर आपने टाइम मेंशन नहीं करनी है तो देन यू हैव टू यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस. सिंपली मैं सपोज आप कहते हैं कि आई डिड माई मैट्रिक इन 2005 फॉर एग्जांपल. अगर आपने जस्ट कहना है कि मैंने मैट्रिक पास की है, तो देन यू हैव टू यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस. यू जस्ट से आई हैव डन माई मैट्रिक, आई हैव कंप्लीटेड माई मैट्रिक. बट अगर आपने डेट मेंशन करनी है, फॉर एग्जांपल कब आपने कंप्लीट की है, देन यू हैव टू यूज़ पास्ट सिंपल टेंस. आई डिड माई मैट्रिक इन 2005.
So that is the difference. Okay, so you have to be careful about these two tenses. Now this is the structure of sentence. Verb की third form has, have, helping verb. Now what is the sentence structure of assertive sentence? तो जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वी स्टडी थ्री sentences, three types of sentences: assertive sentences, negative, and the third one, that is interrogative. So the first one, assertive sentences. So now assertive sentence को हम simple sentence भी कहते हैं, declarative भी कहते हैं, और इस तरह हम assertive sentence भी कहते हैं, assertive sentence. So then what is the structure and formula assertive sentence? तो पहले मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैज़, एग्जांपल आप लोगों के सामने है, that is she has written the story, they have taught the poem, I have taken my breakfast. तो these are few examples of assertive sentence. Okay, has, have में आप लोगों ने be careful about has and have. हैज़ वर्ब सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन के, यानी ही, शी, इट के साथ हैज़ आएगा, या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैव आएगा. ओके, सो दिस वाज अबाउट असर्टिव सेंटेंस. नाउ नेगेटिव सेंटेंस. तो नेगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स जस्ट आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की मिडल में यू हैव टू पुट नॉट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. So for example, they have not accepted my invitation, the principal has not accepted my application, या the police has not caught the thief red handed. Okay, इधर the word principal I have observed, अभी जो previous paper जो employment एग्जाम हुआ था उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने principal का word उसमें गलत लिखा था. तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द वर्ड प्रिंसिपल. दूसरा वाला प्रिंसिपल का मतलब है उसूल, और ये वाला प्रिंसिपल द हेड ऑफ योर स्कूल. सो यू हैव टू पुट जस्ट द वर्ड नॉट बिटवीन मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, सो दीज वर फ्यू एग्जांपल. नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. So you people know well that when you have to make the interrogative sentence, so what you have to do, you have to put the auxiliary verb, the helping verb at the start of sentence. तो आप लोगों के पास जो हेल्पिंग, जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में एज एम आ रहा हम सेंटेंस की स्टार्ट में पुट करते, इस तरह यहाँ भी हैज़ और हैव सेंटेंस सब्जेक्ट से पहले, सेंटेंस के स्टार्ट का मतलब सब्जेक्ट से पहले, यू हैव टू यूज़ बिफोर द सब्जेक्ट, और लास्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क, you have to put question mark. Okay, for example, have you finished your work, have students decorated the school. स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हैव आएगा, अगर सिंगुलर एक स्टूडेंट हो तो फिर हैज़ आएगा, हैव स्टूडेंट, हैव स्टूडेंट्स. ओके, सो हैव स्टूडेंट्स डेकोरेटेड द स्कूल, हैज़ द गार्डनर वाटर द प्लांट्स. Okay, so these were few example interrogative sentence. In interrogative sentence you have to put the helping verb has or have before the subject, and you have, don't forget to put question mark at the end of interrogative sentence. Okay students, so this was all about present perfect tense. In our today lecture we came to know about the present perfect tense, what are the uses of present perfect tense, how to use, what is the structure, what is the order identification. In sentence structure we studied three sentences: assertive sentence, interrogative and negative sentence. Now you, what you have to do, आप लोगों ने क्या करना है, you have to do a lot of practice. आप लोग practice के बगैर, मैं पहले lecture में बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों ने you need a lot of practice. So the more you practice, the more you will understand these tenses. Without practice you can't understand these tenses, so you must do practice. Okay, बाकी पेज नंबर 80, 81, 82 एंड 83 पे अगर आप लोग इंग्लिश बी की बुक खोल के देखें तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. तो आप लोगों ने उर्दू सेंटेंस की जितनी भी उर्दू सेंटेंस है आप लोगों ने कुछ ट्रांसलेट करें. मैं आप लोगों को वो भी सेंड करूँगा, होमवर्क सेंड करूँगा PDF फाइल में, तो आप लोग वहाँ से फिर अपने नोटबुक्स पे उतार दें. सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. So this is enough for today, and if you have any sort of confusion, any sort of question, so you can ask in group. So see you in next lecture.